extensively on foreign policy. तो आपके इजाज़त के साथ में शुरू करता हूँ. एक स्टेटमेंट तैयार है, फिर आप जो भी सवाल पूछना चाहेंगे, I am available for that. Foreign policy of a country is neither detached nor formulated in a vacuum. It is inextricably linked to the domestic conditions and prevailing external conditions, the internal, social, political, and economic conditions, the imperatives of geography, the burdens of history, and current regional and global political and economic landscapes. All have a bearing on what can possibly be done and how it can be done in the foreign policy arena. However, the goal of dynamic management of a country's foreign policy must remain a constant in any given situation, i.e., it must continue to aspire to meet the people's hopes and expectations. When I assumed the position of the Foreign Minister of Pakistan slightly over a year ago, Pakistan's foreign policy was under serious stress, compounded significantly by domestic political turmoil and a dire economic outlook. Our commitment to the China-Pakistan economic corridor was being questioned. Our relations with the United States were at an all-time low. Our traditional partnership with Gulf countries at a suboptimal level. Uncertainty loomed over the GSP Plus and future trajectory of relations with Europe. We were in the FATF grey list, and the trust deficit with the international IMF was at an all-time high. All this was in addition to persistent foreign policy challenges on our eastern and western borders and a renewed threat of terrorism. Before we could settle, Pakistan was rocked by climate-induced catastrophe, floods requiring a robust international response to meet the urgent domestic needs. I do not claim that we have encountered every challenge successfully, but I must share with you that I today feel we have achieved more than what I thought we would have achieved when I first started my tenure as foreign minister. We have just celebrated the 10th anniversary of the China-Pakistan economic corridor in Islamabad, with the Chinese vice premier in attendance. The help and assistance our government has received from China, politically, economically, gives me confidence about the health of Pakistan's relationship with its iron brother. Three senior official level delegations from the United States visited Pakistan in the second half of July 2023, from the Treasury Department, the NSC, and one from the private sector. The last 1 year saw consistently high-level engagement with the United States government, and I'm glad that we now have a path with the US to rebuild and strengthen bilateral relations. What gives me satisfaction, however, is that the positive trajectory in our relations with both the United States and China have been pursued with clarity, underpinned by our consistent position that we do not want to be dragged into global competition. Also, I draw particular satisfaction on how Pakistan maintained its principled position on Ukraine, despite all the doubts and apprehensions in the media. Our voting pattern on related resolutions in multilateral fora remain unchanged. We invested significant effort in engaging both sides of the divide, and today I believe there is a greater understanding of Pakistan's position. This is clearly evidenced by our closer engagement with the US and the European Union, burgeoning energy cooperation with Russia, and visits to Pakistan by the Foreign Minister of Belarus and the Ukraine. This broad, deep, and meaningful engagement with all countries also helped building trust with the countries that sit
on the IMF board. Its coming to fruition last month was a gratifying moment. It was owed in equal amount to the assistance given to Pakistan by China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, a sign that our traditional partners are standing firm with us. I'm happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Shahbaz Sharif. Exiting the FATF grey list, was an important development for Pakistan. And I must remind you कि हमने ना सिर्फ FATF ग्रे लिस्ट से निकले, हमने 2 एक्शन प्लान्स मुकम्मल किए, वक्त से पहले मुकम्मल किए और वक्त से पहले ग्रे लिस्ट से निकले. The Minister of State, Ms. Hina Rabbani Khar, led this effort as the chairperson of the National FATF Coordination Committee. And जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हिना रबानी खर साहिबा ने ना सिर्फ ये काम करवाया मगर ज़्यादा शोशा के साथ ने, यही वजह है कि हम FATF के जो ग्रे लिस्ट थे उससे निकल सकें. In this regard, years of technical work in progress by all state national, इसलिए कि हिना ने ये लिखा भी है मेरे लिए, तो अब मैं सबको तारीफ़ करूँगा, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत जो है behind the scenes इसके हिना रबानी खर साहिबा की थी. In this regard, years of technical work in progress by all national stakeholders needed to be recognized internationally. We were able to project our progress successfully and have it duly recognized by the FATF, thwarting diplomatically the designs of major detractors. Instead of celebrating this success, we remained focused on the job. We also led a legislative process to ensure that our gains at the FATF are consolidated. Engaging Europe and the United Kingdom constructively was a priority for us. Countless meetings and bilateral visits to and from Europe, as well as on the sidelines of multilateral meetings, have reinvigorated our ties. We seek from these countries better access for our goods, visa facilitations, especially for students, work opportunities for our skilled people, and cooperation in the education, science, and technology. We draw particular satisfaction from the recently initiated migration and mobility dialogue with the European Union, which has great potential for opening doors for Pakistanis seeking employment abroad. इस पे हमने बहुत फोकस किया, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं, बैरून मुल्क उनके लिए किस तरीके से हम अपना शेयर में इजाफा कर सकते हैं, और इसमें भी हिना रबानी खर साहिबा की बहुत मेहनत है. The continuation of the GSP Plus facility is another positive development. There is immense potential in our constructive partnership with this region, and we believe we have set the tone and corrected the course. Successive governments need to continue working in the same direction. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We have maintained a robust practical engagement with the Afghan interim government, working on areas such as security, border control and markets, commerce, health, education, transit trade, and almost every facet of bilateral cooperation. Pakistan's peace and security are, however, non-negotiable. My first responsibility is to my people, the people of Pakistan. We continue to engage proactively and constructively at every possible regional international format aimed at promoting peace, security, and stability of Afghanistan. Once again, I want to emphasize the skies is the limit to the opportunities we can create together, but terrorism must be countered. Throughout this furvish and extensive diplomatic push, we never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir. Even as I participated at the SCO Foreign Ministers meeting in Goa this year,
It was our responsibility, while we never once abused the platform of the SCO to further our partisan agendas. In media interactions and from Indian soil, we managed to advocate for the cause of the oppressed people of Kashmir. And in the same spirit, whether it was at the General Assembly at the United Nations, whether it was at the OIC, whether it was the visit of the Secretary General of the OIC to Azad Kashmir, the dissemination of dossiers to the international community on continued Indian brutality on Muslims in Indian-occupied Jammu and Kashmir, advocacy for the Kashmir cause has been a consistent component of our foreign policy. As foreign minister of the Islamic Republic of Pakistan, and also as the last chairman of the OIC Council of Foreign Ministers, I take pride in taking the lead on countering Islamophobia and acts of desecration of the Holy Quran. As chair of the OIC group at the Human Rights Council in Geneva, ये तो Geneva पे पहुंच गए, इससे पहले तो हमने काफ़ी कुछ किया था, मैं आपको याद दिलवाता हूँ. एक तो OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से, उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली इस चीज़ को कंडेम किया, मगर साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो 15 मार्च इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर तो हो चुका था, मगर उसकी कोई मनाने के तरीक़ेकार नहीं था, तो हमने तारीख़ रकम किया और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया. एक तरफ यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल को साथ बिठाया, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको साथ बिठाया. पूरी दुनिया को सामने जो है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के जो फ्लोर है वो सब मौजूद है. हर मुल्क ने अपने बात की और यूनानिमसली ना सिर्फ इस्लामोफोबिया को कंडेम किया, मगर हमारे साथ OIC के साथ the International Day to Combat Islamophobia यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मनाया गया. ये तारीख़ी बात तो था, मगर अफसोस के साथ जो इंसिडेंट्स हैं इस्लामोफोबिया के, जो इंसिडेंट्स थे for the desecration of the Holy Quran in some countries in Europe, वो होता रहा. तो फिर उसके बाद हमने जो लिखा है, एक और तारीख़ी जो कदम था जो पहली बार हुआ था कि OIC का नुमाइंदगी करते हुए हमने यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनेवा में, we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence. और ये भी एक बड़ा तारीख़ी अचीवमेंट है इस लिहाज से कि आपका मौक़िफ़ को, मुस्लिम उम्मा का मौक़िफ़ को जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो आपके मौक़िफ़ को माना है और आपका रेजोल्यूशन वहाँ से पास कर चुका है. तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी एक significant achievement था. I've only mentioned some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners. Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or at the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC, Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues and aapko yaad hoga, climate change. United Nations
United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing, not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora. And it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service, that despite ہمارا جو وسائل ہے وہ کم ہوں گے, لیکن ہمارا جو ایمبیسڈرز ہے, ہمارا جو فورن آفس کے لوگ ہیں, ان کی محنت کی وجہ سے کم وسائل کے باوجود ہم اتنے سارے جو عہدے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے حاصل کیے ہیں. پاکستان کی نمائندگی ان اہم جگہ میں ہم نے یقینی بنایا. Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multidimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms پہ تو میں آ جاؤں گا, لیکن ایک بات جو میرے خیال میں ہم سے مس ہوا اس میں, if I'm not wrong, وہ جو کلائمیٹ ایڈوکیسی کا موقع ہمیں ملا فورن آفس کے پلیٹ فارم سے اور آپ کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے, میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ان دنوں میں تقریباً 1 سال پہلے جب یہ سیلاب ہو رہا تھا اور ہم تو گراؤنڈ پہ موجود تھے, اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا, میں کبھی اپنی زندگی بھی اتنا بے بس محسوس نہیں کر رہا تھا اپنے آپ کو جب میں نے اتنا تباہی دیکھا. میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان جن کا وسائل ہمارا اتنا کم ہے, اتنا چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو, ہم کیسے اس مشکل وقت سے آگے بڑھیں گے. مگر انہی دنوں میں ہم نے فوراً یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو نہ صرف اوبیسلی دعوت تو دیا, مگر یہاں پاکستان لے کر آئے, پاکستان میں اس کو سیلاب متاثرین کے پاس لے کے گئے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ ہم کس قسم کا قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد جو ہم یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے, تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا جو یو این جنرل اسمبلی کا ٹائم تھا, پورا کلائمیٹ میں اس نے اس کو تبدیل کر دیا تھا اور بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا تھا. اس نے ہمارے لیے اس کا گراؤنڈ فلور پہ ایک بڑا سا ایک شو کیس رکھا تھا جہاں تصویریں تھے, ڈاکیومنٹری فوٹیجز تھے. اپنا یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا, وہ سیشن میں آپ کسی کا تقریر بھی سن لیں, اوبیسلی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا تقریر تو اپنی جگہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہے, مگر اس لیے کہ اس نے اتنا لیڈ لیا اور اتنا ہمارا ایشو کو ان کا اپنا ایشو بنا دیا تھا. تو پورا یونائٹڈ نیشنز میں ابھی شاید ان دنوں میں جب 9/11 کے فوراً بعد تب پاکستان اتنا فوکس میں تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ سیلاب کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے دوران ہر ملک نے نہ صرف آپ کا ذکر کیا مگر آپ کو مدد فراہم کیا, آپ کو نہ صرف ریلیف کا سپورٹ دلوائے تھے, اور ان دنوں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کو مدد کر رہا ہے. وہاں سے ہم نے COP27 پہ گئے تھے. COP27 پہ ہمارا خوش قسمتی تھا کہ پاکستان ساتھ یہ G77 پلس چائنا کا سربراہی سنبھال رہا تھا اس وقت, جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گروپ تھا. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایڈوکیسی بھی کی, اور COP27 میں بھی ہم نے تاریخ رقم کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو کلائمیٹ ایجنڈا پہ ڈالا. اس کے بعد ہم نے جو جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے فلڈ ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا, ایک تو وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے بعد آپ کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کے نام پہ ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ہوا.
جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ پاکستان کو بڑا دھچکا ملا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے پچھلے 4 سال، اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے، اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں، سب یا یوکرین سوچ رہے ہیں، سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں، تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے، مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا، اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا، پارٹیزان ہوگا، ایک دوسرے کی شکل تو نہیں دیکھنا چاہ رہے، مگر پاکستان کا اس کوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. جو پاکستان کے مخالف ہے اور پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. اور پاکستان کے عوام کے لیے، ہم سب کے لیے اتنا ایک حوصلہ دلوانے والے وقت تھا کہ اصل میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اور ہمارا مشکل وقت میں عالمی اداروں نے، ہمارے دوست ممالک نے، ہمارا ٹریڈیشنل پارٹنرز نے سرپرائزنگ جگہ سے، جہاں ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا مدد کا پلیج کیا جائے گا، انہوں نے ہمیں آپ کا سکسیسفل ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو مدد فراہم کی، اعلان کیا. اور آج میں واپس آ رہا ہوں گھوٹکی سے، جو سندھ کا ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے، بڑا ٹریڈیشنل ٹرائبل ایریا ہے. اور ہم نے اسی پروگرام کے تحت ہم عورتوں کو اپنے زمین کا مالک بنا رہے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بنا رہے ہیں. ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بھی، تاکہ اگلی بار جب سیلاب آئے ان کو اتنا نقصان نہ ہو، وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنی پوری زندگی کیا نسلوں تک یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا یا اپنا زمین کا مالک بنیں گے، وہ اب اپنے زمین کا بھی اور اپنا گھر کے مالک بھی ہے. تو ہم نے نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے، نہ صرف فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بنایا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ بھی کروایا ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. اینڈ دس از دا سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان اے جنریشن. ان شاء اللہ تعالیٰ میں 2 ملین گھر بنا کے دوں گا. 2 ملین families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, the international financial institutions. ہمارا جنیوا، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو 2020 میں بھی ایک سیلاب تھا، اور اس وقت ہم تو بالکل ہی لاوارث تھے. دنیا تو دور کی بات ہے، وفاق بھی ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو 2020 کے سیلاب میں میں نہ پیسہ دلوا سکا، نہ ریلیف دلوا سکا. اور اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں، مگر اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے، یہ ادارہ ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کیا ہے. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سندھ کے بارے میں، مگر مسئلے تو جگہ جگہ ہے. ابھی تو ہم گھر بنا رہے ہیں، مگر ہمارا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا ہے، یا وہ بالکل 100% گر چکے ہیں، یا وہ اب وہ قابل نہیں ہے کہ ان میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. ہم وزیر اعظم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے درخواست میں وہ اب سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ تعلیمی ادارے بھی بنائیں گے. ہمارے سڑکیں بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اریگیشن نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے، ایگریکلچر میں جو پہنچا تو سو پہنچا. مگر یہ جو گھروں کا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے، اپنی زمین اپنا مکان کا جو پروگرام ہے، یہ انشاء اللہ تعالیٰ ایک انقلاب لے کر آئے گا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں چینج مینجمنٹ انیشیٹو، جو ہمارا ریفارمز کا انیشیٹو تھا فارن آفس کا. میرے خیال میں نے کافی آپ کو بریف کیا ہے اس پہ، مگر پھر بھی میں ایک بار پھر اس پہ بتاتا ہوں. تو اس بائی بینگ سورٹ آف کاگنیسنٹ آف دا فیکٹس کہ ہمیں ریفارم لے کر آنا تھا، اور فارن آفس کو ماڈرن دنیا میں
पुश करने की कोशिश करना का सोच था, और ख़ास तौर पे इसलिए कि हम एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उम्मीद भी यही था कि कुछ नए रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे. तो therefore, under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy का भी board जो है वो पहली बार शायद 12 साल बाद हमने फॉरेन सर्विस एकेडमी का जो बोर्ड है वो भी होस्ट किया है, और ये आपका फॉरेन सर्विस एकेडमी का अल्हम्दुलिल्लाह रिफॉर्म भी हो रहा है. At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I'm happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Chahe wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, executive allowance ho, या cadre strength हो, हमने और हम वज़ीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं. ये पॉइंट्स हमने अपने पहला कैबिनेट मीटिंग में उठाए थे, और पूरा 16 महीने जो है हम सब लड़ते रहे, और हम वज़ीर आज़म साहब के, इसाक़दार साहब के ख़ास तौर पे हम शुक्रगुजार है कि आखिर का जो काम मोफ़ा में 11-12 साल से नहीं हो सका हमारे हाथों से हो गया. मेरी उम्मीद है कि इसका फ़ायदा इस इदारा को होगा, और जो लोग इधर दिन रात मेहनत करते हैं उनका हक़ थे, उनको अपना हक़ हमने दिलवाए हैं. Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at the table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments, and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress, and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, or camp offices का अब नाम तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला जल्द आज रात ही, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So इसका सोच ये था कि 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास तो ज़्यादा इख्तियार है, ज़्यादा काम है, मगर आपका जो कैंप ऑफिस है वो प्रोटोकॉल के अलावा उनका इतना ज़्यादा ना इख्तियार है, ना स्कोप है, ना मैंडेट है, ना, तो इसलिए कि अब हमारा कार्डर स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो गया है और बाकी रिफॉर्म्स भी आ गए हैं. हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा जिम्मेदारी अपने कैंप ऑफिस को दिलवाए, और वो बाकायदा हर सूबे में द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए एक आउटपोस्ट हो, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो कैंप ऑफिस है, जो आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट है for foreign affairs in the provinces, वो फिर सूबाई हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करे.
अगर वो वज़ीर आला किसी सूबा का या किसी वज़ीर बाहर जा रहा हो, उनको थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाए, उनको पता चले कि पाकिस्तान का क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारा पोजीशन है, अगर वो अपने तौर पे किसी मुल्क के साथ या किसी मुल्क के सूबा के साथ कोई काम करना चाहे, तो बड़ा ज़रूरी था कि उनको फॉरेन ऑफिस का सपोर्ट मिला जाए। और साथ साथ सारे सूबे में जो है आपके काउंसिल जनरल्स मौजूद हैं, उनके साथ मेरा ख्याल में ज़रूरी था कि वहाँ हमारा फॉरेन ऑफिस का एक ऐसा आउटपोस्ट हो डायरेक्ट उनके साथ वहाँ ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेट कर सके। इससे इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपको सूबाई हुकूमतों को फ़ायदा मिलेगा, मगर जो काम में हमारा बॉटल टैक्स हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी वज़ीर ख़ारजा को बताया जाता है कि वो कोई काम पेशावर में करना चाह रहे हैं, जब तक यहाँ से लेके प्लानिंग के पास जाएगा, प्लानिंग से लेके फिर पता नहीं कब तक वहाँ सुबह में पहुँचेगा, बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर डायरेक्टली वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैन सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो मेरे ख्याल में ये अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इनिशिएटिव मोफा को भी फ़ायदा दिलवाएंगे और जो वो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी फ़ायदा दिलवाएंगे। Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honorable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. ये भी हमने समझा बहुत ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सखर से आपको इधर इस्लामाबाद आना पड़े, इवन कराची का कैंप ऑफिस पहुंचना पड़े, तो आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा। I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our 3 major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods,
which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz आपको हाँ भाई let don't steal Mumtaz's thunder on my last. Okay, लेकिन आप you'll call on people. नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन से चैनल के साथ हो? या ओके अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियाँ गिनवाई बिलावल साहब, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे करीब करीब हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है। तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफगानिस्तान की जो इंटरम वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से ना पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल कोई ऐसी मूवमेंट हुई? क्या वजूहत है? मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? आपकी बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन हमने, जहाँ तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्शन, जो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं मगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी वायलेट करते हैं, हमारे अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं, जब तक भारत उस पर नज़रसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे इंगेज करें। इसके बावजूद, इन कंडीशंस के बावजूद और हमारा पोजीशन के बावजूद, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मौके हो, मैं पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा था 12-11 साल बाद जो गोवा गया, इसके बावजूद कि हमारे एतराज़ात थे, इसके बावजूद कि मेरे सर की कीमत लगा हुआ था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़, हमारा हक था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें और वो हक हमने पूरा करवाया। हाँ, वापस आके हमने भारत के साथ जो है अमन के जो मुआहदे हैं वो साइन नहीं किए, लेकिन जितना स्पेस हमारे साथ थे उस स्पेस में हमने 16 महीने में उस स्पेस में हमने मैक्सिमलाइज पाकिस्तान का पोजीशन भी किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस पे हो, चाहे वो SCO पे हो, इस हद तक कि हमारा SCO CFM पे जाने के बाद भारत ने ये महसूस किया कि बेहतर होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का SCO का फंक्शन हो वो वर्चुअल किया जाए, ऐसे ना हो कि पाकिस्तान का डेलीगेशन आ जाए और एक बार फिर हमारे लिए मसाइल पैदा किया जाए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि ये रिलेशनशिप ख़ास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि द फॉल ऑफ काबुल, अब 1-2 साल ही हो चुके हैं सिंस द फॉल ऑफ काबुल, कि टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में जो सारे चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। मगर मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि हम उनके साथ इंगेज करने के साथ साथ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे हमारा लीडरशिप में पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी, जहाँ तक अफ़गानिस्तान में औरतों के तालीम के मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ने बड़ा एक वाज़े, ओपन और क्लियर पॉलिसी रखा है। हम ना सिर्फ उनके साथ क्लियरली बात करते हैं, आपके साथ क्लियरली बात करते हैं इस इशू पे। OIC के प्लेटफॉर्म से हमने एक और जो तारीख़ी चीज़ किया था, जो याद नहीं आया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पहली दफ़ा OIC के प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस में वुमेन इन इस्लाम पे मैंने ख़ुद जाके
एक कॉन्फ्रेंस रखा, उसका सरबराही की, पूरी दुनिया को दावत दिलवाई ताकि ये एम्फसाइज कर सके, दुनिया को दिखा सके, OIC के तमाम ममालिक अपने अपने केस बता सके, कि मैं बता सकूं कि मैं पाकिस्तान हूँ, मैं मुस्लिम ममालिक हूँ, और हमने पूरी मुस्लिम उम्मा से पहले हमने अपने खातून वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया। सऊदी आके बता सके कि हमने हमारा क्राउन प्रिंस की क़ियादत में किस तरीके से औरतों के हुकूक में इनकलाब लेकर आए हैं सऊदी अरेबिया, ताकि UAE आके अपने बता सकें कि किस तरीके से उन्होंने हर डोमेन में औरतों को मुस्लिम ममालिक होते हुए अपने। मैं समझता हूँ कि वो बहुत वाज़ेह पैगाम था कि जो वेस्टर्न दुनिया में वो पेंट करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम दुनिया को कि हम अपने औरतों के हुकूक नहीं देते हैं, ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था वो पैगाम भेजने। जी थैंक यू। अली हुसैन फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्डर। बिलावल साहब, आपने इंडिया का जिक्र की है 75 सालों में जो नहीं हो सकता वो 16 महीनों में नहीं हो सकता। कश्मीर का जिक्र आपके उसमें नहीं था, पूरी स्टेटमेंट है ये हमारा। सर आपको सुनना चाहिए, जिक्र था। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप शायद सो गए थे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या कुछ ऐसे। अच्छा मेरा क्वेश्चन अफगानिस्तान के हवाले से है। अगेन तालिबान इंटरन गवर्नमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का अभी ताज़ा स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मसाइल घर के अंदर ही हल करे और मीडिया के ऊपर जो है एक हमारे खिलाफ एक जो पब्लिक ओपिनियन बनाने से हालात आपके बेहतर नहीं होंगे। तो उसके जवाब में क्या मैं तो किसी का स्टेटमेंट का जवाब तो मेरा नहीं ख्याल है मुनासिब है कि मैं दूं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि हम सब तो आदी हैं, वी आर ऑल यूज्ड टू बीइंग ए इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंट्री, और एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड कंट्री को होने के लिए कि सर्टन रूल्स ऑफ द गेम है इंटरनेशनल दुनिया के, दैट यू हैव टू अबाइड बाय, और जब तक यू डोंट अबाइड बाय दोज रूल्स कोई डिफ़िकल्टीज पैदा होंगे। जो ओपिनियन बनाया जा रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, वो हमारा बयानबाजी की वजह से नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ की वजह से ये ओपिनियंस बन रहे हैं। ये ओपिनियंस सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बन रहे हैं, मगर जगह जगह ये ओपिनियन बन रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को साथ लेके, पूरी दुनिया को साथ लेके, हम अपना अफ़गान बहन भाइयों को मदद दें। इस वक्त उनको मदद की ज़रूरत है, मगर आपको ये भी मालूम होगा कि हर किसी के लिए अपना सिक्योरिटी, अपने अवाम का सिक्योरिटी वो नंबर 1 प्रायोरिटी होता है। वो खुद स्टडी कर सकते हैं, गिनवा सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव एक फैक्ट है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। आप गिन सकते हो कि फॉल ऑफ काबुल के बाद पाकिस्तान में किस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़ये में इजाफा हुए हैं। अब मैं उसका जस्टिफिकेशन या रीज़न आपको नहीं देता हूँ, आप खुद स्टडी करें, कोई और खुद स्टडी करे और मुझे बता दे। मेरा ख्याल में हमारा कोऑपरेशन, हमारा एंगेजमेंट भी ज़रूरी है, मगर वो ममालिक जो सीरियस है, जो वाकई ही डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी चाहते हैं, वाकई ही वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन चाहते हैं, तो फिर इस किस्म का बयानबाजी के बजाय उनको अपने, हमारे और दूसरे ममालिक के जो जेन्युइन कंसर्न्स है उनको एड्रेस करने पड़ेंगे, वरना जैसे हालात है वो वैसे ही रहेंगे और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा और सबसे भरकर अफ़गानिस्तान के अवाम को होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे अवाम को। शुक्रिया। आपने अपनी स्टेटमेंट में आउटसाइड ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेस में थी और उसको आपने डैमेज कंट्रोल किया।
आप किस हद तक कामयाब हुए डैमेज कंट्रोल करने में, और अपने सक्सेसर्स को क्या मैसेज देकर जाएंगे कि वो इस डैमेज को फर्दर भी कंट्रोल करें? आप इंडिया गए, आपने अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अफगानिस्तान भेजा, आप खुद अफगानिस्तान क्यों नहीं तशरीफ ले गए? और एक आखिरी पॉइंट ये है कि आपने कैंप ऑफिसर्स की एम्पावरमेंट की बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की आप ये सोच तो कार फरमाई नहीं कर रही कि सूबों को फॉरेन ट्रेड के लिए, एक्सटर्नल बिजनेस के लिए एम्पावर कर दिया जाए, ऑथराइज कर दिया जाए थ्रू सम legislation or constitutional amendment down the road. Okay. Thank you. So सूबे 18वीं तरमीम के बाद और उससे पहले भी इनको ये सारे इख्तियार थे, मगर हम ये चाह रहे हैं कि वो अब इतना दूरी है इस्लामाबाद का, यहाँ हम वफाक को संभालते रहे जब तक उनका काम को हम देख ले। अगर वो जो कैंप ऑफिसर्स ऑलरेडी मौजूद है, और अभी आई मीन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम श्योर उनके पास ज़्यादा होंगे, लेकिन जो हमारा इम्प्रेशन है वो ज़्यादातर उनको प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोटोकॉल से ज़्यादा उनका काम होना चाहिए। मैं जानता हूँ, मैंने ख़ुद देखा है किस तरीके से सिंध हुकूमत, चाहे वो चीन के साथ हो या दूसरे ममालिक के साथ हो या इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल इदारे के साथ, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एक्सेट्रा। वैसे ही हो रहा होगा बाकी सूबों में। मैं चाहूँगा कि जो भी सूबा हो, जो भी उनका वज़ीर आला हो, दे शुड बी सपोर्टेड टू द फुलेस्ट बाय द फॉरेन ऑफिस। एंड इस वक्त वो नहीं हो रहा है, तो इससे लेजिस्लेशन के बगैर एक नोटिफिकेशन के थ्रू फॉरेन ऑफिस ये काम करवा सकते हैं। जहाँ तक मेरा 16 महीने में कितना डैमेज कंट्रोल, लुक आई थिंक कि वैसे तो काफ़ी डैमेज कंट्रोल हुआ है, एंड वो एक अंदाज़ था ना सिर्फ हुकूमत कराने का, सियासत कराने का, पर अफसोस के साथ फॉरेन पॉलिसी चलाने का, जिसका नुकसान मेरा नुकसान नहीं हो रहा था, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान हो रहा था। आप अगर, मैं चाह रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन से मैं अपना GSP प्लस भी ले लूँ, अपना माइग्रेशन पॉलिसी भी तय कर लूँ, अपना लेबर मार्केट्स खोलूँ, अपना अवाम को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किया जाए, उनके लिए वीज़ाज़ में तकलीफ़ में कमी हो, तो फिर अगर यूरोपियन यूनियन ने मुझे कोई ख़त भेजा या मेरा वज़ीर आज़म को ख़त भेजा, तो मैं अपना पॉपुलैरिटी के लिए और एक दिन का हेडलाइन चमकाने के लिए वो ख़त ऐसे ना लहराए और कहें देखे वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फॉरेन पॉलिसी चलाना है, तो एक हम्बल अंदाज से, वैसे वो मेरा अंदाज़ है, लेकिन एक हम्बल अंदाज से आप फॉरेन पॉलिसी चलाएं ताकि आप अपने अवाम के लिए फ़ायदा हासिल करें। अगर मैं ओई फ़लाँ वज़ीर आज़म के से मुखातब हूँगा जस्टिस में, ओए सदर, तो फिर जो है किसी एक इंडिविजुअल की ज़ाती अना की वजह से मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारा कोशिश ये हुआ कि जहाँ भी हम जा सके इस इम्प्रेशन को डैम्पन करने के लिए जो जेन्युइन कंसर्न्स थे, और मैं सरप्राइज थे कि कितने ज़्यादा ममालिक ने ये पॉइंट मेरे साथ उठाए। कितने कहानी एक दिन मैं आपके साथ जब रिटायर हो जाता हूँ मैं शेयर करता हूँ कि क्या क्या बातें। तो वो एक हमारा कोशिश रहा कि इंगेज करके इन चीज़ों को एड्रेस करे, मगर सिर्फ इंगेज करने में और 16 महीने में आप समझे कि इंगेज हो गया तो सब ठीक है, ऐसे नहीं है। एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, एक कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत है, और हमारा कोशिश होगा कि जो भी ये ओहदा संभालेगा मेरे बाद, हमने जैसे मैंने जिक्र किया, एक ऐसा मैंने पूरा एक एक्शन मैट्रिक्स बनाया है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जिन जिन के साथ मिला हूँ, जो भी हमने वादे किए, जो भी उनने वादे किए, जो काम हमसे रहता है, जो हमसे हो गया वो तो हो गया, जो इन प्रोसेस है वो प्रोसेस है, जो अगला बंदा आए तो उनके सामने एक पूरा जो है एक पिक्चर हो कि आपने इस पे अमल दरामद करना है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, हमने पहली दफ़ा फॉल ऑफ काबुल के बाद ये जो ट्राइलैटरल, पहली दफ़ा ही था ना, पहली दफ़ा ट्राइलैटरल फॉर्मेट में पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान
वहाँ जाने के बजाय मैंने इनको इधर बुलाया। चीन के साथ हमने ये ट्राइलैटरल मीटिंग करवाया और मेरा सोच था, कोशिश ये था कि इनको हम हिला दें कि देखिए ये पाकिस्तान का एक कंसर्न है, ये चीन का भी एक कंसर्न है कि जो नेशनल सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का मामला है इस पे हमें काबू करना पड़ेगा। और वो इसमें इस हद तक तो कामयाब था कि हमारा स्टेटमेंट में तो वो मान चुके टीटीपी के बारे में और दूसरे दहशतगर्दी के बारे में। अब उस पे अमल दरामद करवाने में हमें टाइम लगेगा। जहाँ तक हिना की ट्रिप थी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब था कि हमारा मुल्क के जो पहले खातून वज़ीर ख़ारजा थी वो ये ट्रिप अफ़गानिस्तान में करती। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वक्त में एक ही सवाल कीजिएगा। हाँ, इसने तो 3 सवाल। मैंने स्पीकर साहब के डिनर पे भी जाना है, तो फायर राउंड ज़रा करके सब एक एक सवाल पूछ। अब तक टीवी से सर मैं ये जानना चाहूँगी, अभी टेररिज्म की आपने भी बात की, पाकिस्तान जो कि खुद विक्टिम रहा है इतने सालों से टेररिज्म का, क्या वजह है और हमें क्या फर्दर इक़दाम करने होंगे कि अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों हमसाया ममालिक भी, और फिर अमेरिका के साथ जो हिंदुस्तान का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें भी पाकिस्तान को ही टेररिज्म के हवाले से मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर पाकिस्तान को कोताही हुई कि अपनी पॉइंट हम रजिस्टर नहीं करवा सके, या हमें इस बात को रजिस्टर करवाने के लिए क्या करना होगा? तो मेरा ख्याल में आपकी बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक पाकिस्तान की अपनी लड़ाई है दहशतगर्दी के सामने, वो तो आपके सामने है, दुनिया माने या ना माने। सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं, मतलब quantitatively in the numbers of the most victims of terrorism and terrorist attacks, that country is Pakistan. हमने ये अब हर लेवल पे देखा है, हर जगह कहीं न कहीं ये इस इशू को मैंने ज़ाती तौर पे पुख्ता है और पूरा मुल्क में हमने ये इस इशू से मुकाबला किया है। मगर इनसे जो हमने अब इंशाल्लाह ताला मुकाबला करके इनको हरवाएंगे भी से, हम इसलिए नहीं करेंगे कि इंडिया ने कहा या यूएस का किसी स्टेटमेंट में कोई जिक्र हो। हम तो इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपने आने वाले नस्ल को बचाने चाहते हैं। हम इसलिए करने चाहते हैं कि यह हमारा अपना मंशूर का हिस्सा है। हम इसलिए इनका मुकाबला करना चाहते, इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारा मुल्क के दुश्मन है, हमारा मज़हब के दुश्मन है, हमारे अवाम के खून के साथ होली खेलते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि हम इनका मुकाबला तो करेंगे, मगर इसलिए करेंगे कि ये हमारा अपना लड़ाई है, ये किसी और का लड़ाई नहीं है। जहाँ दूसरे ममालिक के गलतफहमियाँ हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। आपने सुना होगा अपना मैंने स्टेटमेंट में जिक्र किया किस तरीके से हमने कंसल्टेटिव प्रोसेस का फ़ायदा उठाया, और वो ना सिर्फ यहाँ मोफा के अंदर मगर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ साथ। एंड आई एम श्योर कि आप ये तो इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो सोलो फ़्लाइट करके मैं इंडिया के साथ अमन भी करवा सकता और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी से पाक कर सकते हैं। इस काम के लिए कलेक्टिव विजडम की ही ज़रूरत है। मैं इस बात का आई थिंक दैट इट इज़ जो हमारे वक्त का एक पॉजिटिविटी था कि उस कलेक्टिव विजडम की वजह से हमें ये मौका मिला कि ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपना पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। जहाँ तक सिक्योरिटी का डोमेन है, ख़ास तौर पे जो हमारा नया आर्मी चीफ ने
ایک کلیئرٹی لے کر آیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. یہ جو پورا عجیب سلسلہ چل رہا تھا پہلے کہ وہ ادھر آئیں گے اور ادھر رہیں گے اور پتہ نہیں کس طریقے سے جادو کے ساتھ امن ہو جائے گا, وہ بہت ہی ایز این انڈیویجول, ایز اے فیملی who suffered from terrorism, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, وہ ہمارے لیے بھی ایک ڈی موٹیویٹنگ اور بڑا افسوسناک ایک سلسلہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی فوج کو مارے ہیں, آپ کی پولیس کو مارے ہیں, اسلحہ اٹھا کے آپ کے آئین نہیں مانتے, آپ کے ملک کو نہیں مانتے, ان کو ہم افغانستان سے اٹھا کے ادھر پاکستان میں بسا دیں. So I think the clarity that the army leadership has brought to this issue, اس لیے کہ پارلیمنٹ نے بھی اس پہ زور دیا, ہم نے انسسٹ کیا کہ نہ صرف NSC ہوگا, پارلیمنٹ کو بریف کیا جائے گا. تو اس کلیئرٹی کو آئی تھنک کنٹینیوٹی چاہیے, کنسسٹنٹی چاہیے, اس قسم کا سویلین سپورٹ بھی چاہیے, پر اس کلیئرٹی کا بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں, ورنہ آپ کا جو پالیسیز ہے وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں. بلاول صاحب بہت شکریہ. بلاول صاحب میرا نام اعزاز سید ہے. اچھا, نائس ٹو میٹ یو. اچھا بلاول صاحب, ایک چیز جو ہم نے کوارٹر کے ساتھ دیکھی اور دیکھا ماضی میں کچھ غلطیاں آپ نے بھی کی تھی کہ فارن پالیسی کو پبلک میں لے کے جانا. ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا رہا آزاد کشمیر کا یا باقی جگہوں کا, باقی سیاسی جماعتوں نے بھی اور آپ نے بھی غلطیاں کی کہ پالیسی کو لے کے گئے, آپ پبلک میں لے کے گئے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر جو ایک شیڈو گورنمنٹ کا سسٹم یا اپنے اندر جو مختلف ممالک کے بارے میں پالیسی بنانے کا سسٹم ہے اس کو مؤثر کریں؟ کیونکہ انڈیویجول منسٹرز آتے ہیں وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر, لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کسی قسم کی نہ افغان پالیسی ہے, نہ ہمارے پاس دیگر ایشوز کے اوپر کوئی پالیسی ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو زیادہ مضبوط کریں؟ ایاز بھائی, آپ تو نا زیادہ ٹائم نون لیگ کے ساتھ گزارتے ہو, آپ کو کبھی کبھار جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ذرا دیکھنا چاہیے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا فارن پالیسی کے پلیٹ فارمز ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ صرف موجود ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب کابل fell, we were the only political party to call a central executive committee in Pakistan. And آپ ہمارا جو اس وقت کا CC کا اسٹیٹمنٹ کو نکالے, وزیر اعظم پاکستان کا اور اسی وزیر خارجہ کا, وزیر دفاع کا, پتہ نہیں کس کس کا اسٹیٹمنٹس کو آپ کمپیئر کریں, اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے خدشات تھے شاید اب لوگوں کو وہ محسوس ہو رہا ہے. جہاں تک سیاستدانوں کو فارن پالیسی کی باتیں الیکشنز میں عوام میں لے کے جانا, وہ تو ہم نے کرنا ہے, وہ ہمارا کام ہے, ہم نے عوام کو اس پروسیس میں شریک کرنا ہے, انکلوڈ کرنا ہے. لیکن جب میں اس عہدہ پہ ہوں اور میں اس عہدے پہ فائز ہوں تو میرا ایک ذمہ داری ہے کہ میں اپنا جو کام ہے اس کو unnecessarily پاپولسٹ پالیٹکس کی وجہ سے, اپنا ذاتی سیاسی فائدہ کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تیسرا جو آپ نے میرا کشمیر کے اسٹیٹمنٹس کا اشارہ کیا, وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں درست تھا. میرا موقف, میں کم عمر کا ہوں ضرور, مگر میرا موقف جو اس الیکشن میں تھا کیا تھا کہ آپ مودی سے خیر کی امید نہ رکھیں. یہ نہ واجپئی ہے, نہ منموہن سنگھ ہے, یہ بچر آف گجرات تھا اور یہ بچر آف کشمیر بنے گا. اور تب چاہے وہ جیو ہو یا دوسرے, مجھ پہ بہت تنقید ہوا. اس لیے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ امن کے لیے اور صحیح تعلقات کے لیے کوشاں رہا ہے, اور آج بھی ہمارا کوشش تو وہی رہے گا. مگر دس پرسیپشن اینڈ مس پرسیپشن that was there in Pakistan, and unfortunately ہمیں اسی غلط فہمی کے ساتھ کہ جیسے واجپئی تھا ویسے ہی مودی ہوگا, ہمارا جو فارن پالیسی چاہے وہ 2013 سے لے کے 18 تک ہو یا 18 سے لے کے 2019 تک ہو, وہ اس لیے میرا خیال میں اس میں تھوڑا سا اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارا کمزوری تھا. اگر ہم سب
उसी नौजवान का सोच के साथ इस पे अप्रोच करते तो शायद हम एक दूसरा सूरत हाल पे आ जाते। मेरा तो मौक़िफ़ वही रहा है, दूसरे अब मेरे पेज पे आ चुके हैं। बिलावल साहब, मेरा वन लाइनर ये था, मेरा वन लाइनर ये था एक वन लाइनर पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपनी फॉरेन पॉलिसी की अलग अलग नहीं है। मेरे पास है। Foreign Minister, this is Sumaira Khan from Zardari. अस्सलाम वालेकुम। And we heard your statement as well, but my concern stays the same. पाकिस्तान की पोजीशन अगर वाज़ेह कर लीजिए कि आपके challenges में एक बड़ा challenge बैलेंस लाना था पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन, अमेरिका, ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपने क्लियर कर दिया, अब हमें चीन, रूस, अमेरिका और ईरान से बताइए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और आपने इतने सारे ऐड किए, पहले चीन, रूस, अमेरिका, हमने सब के साथ इंगेज किया। उसी में मेरा ख्याल में पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान के मुफाद है, पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा है। हम किसी का ब्लॉक पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्टेड है, ना हम इस पोलराइजेशन और पार्टिजनशिप जो ग्रेट पावर्स के दरमियान चल रहा है, हम उसमें भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हम अपने काम करवाना चाहते हैं। हमारा 220 मिलियन प्लस जो भी सेंसस कहता है पॉपुलेशन जो है हमारा, उसको उनको हमें डिलीवर करना पड़ेगा, बेसिक नीड्स उनको पूरा करना पड़ेगा। और अगर हम दूसरों के लड़ाई में पड़ेंगे, sort of if we'll get drawn into other people's fights, then we'll be distracted from that responsibility. तो यही वजह है कि हमने सबके साथ इंगेज किया एंड किसी को ऐसे ये इम्प्रेशन नहीं दिया कि इट्स म्यूचुअली कि इनके इस ताल्लुकात की वजह से किसी और के ताल्लुकात पे असर होगा। और मेरा उम्मीद है कि जो भी इस ओहदा पे आएगा मेरे बाद, उनका भी ये पूरा कोशिश होगा कि वो सबके साथ इंगेज किया जाए। ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब, क्या फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस आपके दौर में इतनी शानदार रही है कि इस बात का इम्कान है कि मुल्क की बागडोर जो है किसी फॉरेन ऑफिस के किसी ऑफिसर को सौंपी जा रही है? आई एम श्योर कि वज़ीर आज़म साहब और जो लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है वो जल्द कंसेंसस पे आएंगे और फिर ऐलान करेंगे कि कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। बिलावल साहब, मेरा एक ही सवाल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक सदर ईरान अहमदी निजात के साथ एक गैस पाइपलाइन जो है उसका इफ्तिताह किया और इस मामले को बड़ा अरसा हो गया। हाल ही में ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और उन्होंने जोर दिया कि ईरान गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल होनी चाहिए। पाकिस्तान, आपने बारहा अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्की मफाद और अवाम का फ़ायदा, तो गैस पाइपलाइन से पाकिस्तान का मफाद भी जुड़ा हुआ है और अवाम का फ़ायदा भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की तरक्की भी जुड़ी हुई है। तो उस पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वादे हुई, हमने देखे, आपने यकीन दिलाया कि ये मुकम्मल होगी, लेकिन कुछ सब्सटेंटिव बात सामने नहीं आई। तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की तरफ से अमली इक़दामात का आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। इसलिए मैं देख रहा था इतना अजीब अजीब बातें मीडिया पे आ रहा था इसके बारे में और मुझे नहीं पता कहाँ से आया, तो मुझे ये मौका मिला कि मैं वाज़ेह क्लैरिफाई करूँ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली स्टिल कमिटेड टू द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और उस तरीके से मुकम्मल हो जिससे ना पाकिस्तान को ना ईरान को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल इसी में है कि हम अपने ख़ास तौर पे ईरान जैसे नेबर के साथ एनर्जी का और दूसरी चीज़ों का ट्रेड किया जाए। मैंने ईरान का दौरा ख़ुद किया था सून आफ्टर I'd become फॉरेन मिनिस्टर, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया। फिर उसके बाद हम PM के साथ उनका बॉर्डर मार्केट्स पे जो बॉर्डर मार्केट का भी इफ्तिताह भी किया और हमारा बिजली का जो वो फरहम कर रहे हैं गवादर को,
उसका भी इफ्तिताह हुआ और फिर उनका वज़ीर ख़ारजा का दौरा अब हाल ही में हुआ था, जहाँ हमने काफ़ी अहम जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चाहे वो इकनॉमिक कोऑपरेशन और दूसरे कोऑपरेशन के मुआहदे भी हमने साइन करवाए। और जितना पिछले 16 महीने में पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी आया है, मैं अपने जो प्रीडिसेसर्स हैं उनके दौर से आई एम हैप्पी कि हम अगर मुकाबला करना चाहे तो मेरे ख्याल में हमारा अच्छा रिपोर्ट कार्ड होगा उस फ्रंट पे। Thank you, Foreign Minister. Pratik Haider here from GCB. So, एक बहुत बड़ा इशू जो पिछली पीटीआई गवर्नमेंट में रहा वो साइफर का और पाक यूएस रिलेशन बहुत सफल हुए। आपने more than 4-5 मीटिंग्स अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ की। लास्ट ईयर में भी स्टेट डिपार्टमेंट में था जहाँ पे आपने 75th एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से मनाई थी। लेकिन जब मोदी सरकार ने वाशिंगटन का दौरा किया तो एक बहुत खौफनाक मुश्तरका एलामिया उसमें अमेरिका भारत की दहशतगर्दी के को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के हवाले से हाँ में मिलाया। आपने यहाँ नाज़िम अल-अबूद को समन करके डिमाश किया। तो क्या वजह है कि आपकी 5-6 मीटिंग्स फिर हर लेवल पे इंगेजमेंट रही कि हम अमेरिका को कन्विंस नहीं कर सकते, इंडिया जो बयानिया दे रहा है उसको वो ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान ने अपना बयानिया वहाँ पे वाशिंगटन में प्रोजेक्ट किया, why it is so that why we are failed that America paid attention to them, और इस वक्त रिलेशंस की क्या सूरत हाल है? एक तो आई थिंक पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस में तो काफ़ी बेहतरी आया है इस इंगेजमेंट के साथ, मगर बहुत और काम करने की ज़रूरत है। और कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी है और कुछ शिफ्ट्स है जियो पॉलिटिक्स में जिसका असर भी ज़रूर इस रिलेशनशिप पे भी होगा, मगर हमने अपना स्पेस में रह के अपना काम करवाना आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा ख़्याल में इससे डायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को, ख़ास तौर पे जो हमारा कोशिश रहा है कि हम बड़ा बिज़नेस का इंटरेक्शन में इजाफ़ा हो। और उनका जो दिलावर सईद साहब इधर आया था, मतलब लंबा देखो कौन आया। हम पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप से बेहतरी ज़रूर आया। जहाँ तक यूएस और भारत का जॉइंट स्टेटमेंट था, ऑब्वियसली हमने डिमाश किया और हर लेवल पे हमने कम्युनिकेट किया कि ये क्यों ऐसे क्यों किया गया। लेकिन अगर आप उनके पुराने स्टेटमेंट्स निकालें, ट्रंप और मोदी का स्टेटमेंट, यही अल्फाज, इसी के किस्म के इल्ज़ामात, और ख़ास तौर पे जब अमेरिका भारत के साथ खड़ा है तो जब ये बातें कहते हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें शायद कम हो और ज़्यादा उनका जियो पोलिटिकल कंपल्शंस की वजह से इस किस्म के अल्फाज भारत के मौजूदगी में इस्तेमाल होता है, मगर जब हमारे साथ होते हैं तो इस किस्म के अल्फाज ना हमारे जॉइंट स्टेटमेंट्स में होते हैं, ना हमारे जब डिफेंस लेवल पे इंटरेक्शंस होते हैं तो तब भी इस किस्म का कोई एतराज़ नहीं आता। इनफैक्ट उनका जो हमारा जो जॉइंट स्टेटमेंट्स है वहाँ तो हमारा काउंटर टेररिज्म और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का तारीफ़ किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे और सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अचानक आप उसको देखें ना तो आपको लगेगा हाय हाय अमेरिका ने कैसे ऐसे कहा है पाकिस्तान के बारे में, मगर आप उससे पहले जो लिटरली वन बिफोर दैट, जस्ट द लास्ट स्टेटमेंट बिफोर दैट, जो भारत और अमेरिका का दरमियान होगा, उसी किस्म के लैंग्वेज इस्तेमाल किया होगा। इट डजंट मीन वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, वी डू ऑब्जेक्ट टू इट। इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट, इट्स inconsistent, it's not helpful in solving any of the issues, but we take it with a pinch of salt because we understand that there are geopolitical compulsions that result in that. Having said that, दहशतगर्दी का मुकाबला करना, अपना मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करना हमारा जिम्मेदारी है, हमें करना पड़ेगा ताकि हम अपने मुल्क में अमन कायम करें, अपना मुल्क में मुआशी तरक्की हो, और जो लोग तनकीद करना चाहे भी उनको कोई स्पेस नहीं मिले कि वो तनकीद कर सकें। मज़हर साहब आप कहाँ हो, नजर नहीं आ रहे। हाँ
سر آپ کا دیکھو یہ پی ٹی آئی کا غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ فیصلے کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلے کرتے ہیں. میں تو کسی لابینگ فرم پہ خرچ نہیں کر رہا ہوں, نہ اپنے کارکن کو بیچ رہا ہوں عجیب کانگریسمن کے پاؤں پکڑنے کے لیے کہ میرا ملک کے خلاف بیان دے اپنا ذاتی مسئلے کے لیے. جہاں تک میرے ٹرپس ہے امریکہ کے, جی میرے ٹرپس ہوئے, اور بس افسوس کے ساتھ کہ میرے جو حکومت ہم سے پہلے آیا ان کا ایک ایسا اپروچ تھا جس سے اس ریلیشن شپ کو نقصان پہنچایا گیا, اور ہم اس نقصان کو درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر ایک بات میں ضرور زور دوں گا کہ جب آپ امریکہ جاتا ہوں تو صرف اٹس ناٹ اونلی فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اگر آپ کا ڈی سی میں یا واشنگٹن ڈی سی میں اوکے ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا ان کا کانگریس کے ساتھ اگر میرا کوئی کام ہو تو میں واشنگٹن ڈی سی جاتا ہوں. جب یونائٹڈ نیشنز کا کوئی کام ہو تو میں نیو یارک جاتا ہوں. تو چاہ میں او آئی سی کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے دیکھو یہ امریکہ پہنچ گیا. نہیں, میں او آئی سی کے لیے گیا ہوں, نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز ہے, وہاں میں نے یہ فنکشن رکھنا ہے. چاہ میں G77 کا سربراہی کر رہا تھا جو سب سے بڑا گروپ ہے یونائٹڈ نیشنز کا, گلوبل ساؤتھ کا, اس کا میں سربراہی کر رہا ہوں, اس کا میں میٹنگز کر رہا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو پھر سے امریکہ چلا گیا. اب کون ان کو سمجھائیں گے کہ امریکہ کا دورہ میں فرق ہے, یونائٹڈ نیشنز کا دورہ میں فرق ہے, اور وزیر خارجہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ باہر جا کے دورہ کریں. ان فیکٹ اگر وزیر اعظم بننے کا جو خواہش ہے اس پہ ہم فوکس کر دیتے تو مجھے زیادہ ٹائم پاکستان میں گزارنا چاہیے تھا. کس پاکستان میں کیمپین اور سیاست کرنے کا, اور میرا پارٹی کو لیڈ کرنے کا, اور میرا پارٹی کا کیمپین چلانے کا کو کافی نقصان پہنچا گیا ہے اس بات کے کہ میں یہاں مصروف رہا ہوں وزیر خارجہ کے دفتر میں. نادر کو بھی آپ ذرا موقع دیں, he's been trying. Okay, so آپ ڈیزائن. بلا شبہ بہت ساری کامیابیاں ہیں آپ لوگوں کی. لگتا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں انسانوں نے شاید جنہوں نے کام کیا جتنا آپ نے محنت سے کام کیا ہے. جیسے آپ نے طلباء خوش ہیں آپ کے کہ آپ نے جتنے 75 سال کے اندر یونیورسٹیاں نہیں بنی, آپ نے ایک دن میں بہت بڑی کامیابی ہے. ڈالر کی قیمت 70 سال میں جتنی نہیں بڑھی وہ 16 مہینے میں بڑھی ہے. جتنی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے. یہ آرگنائزیشن کون سا ہے اس کا؟ ڈیلی میٹرو. کیا ہے ڈیلی میٹرو؟ آپ نے خود اپنا کمرہ میں بنا کے ڈیلی میٹرو کہہ کے اتنا ہے. چلے سوال پورا کرے, مکمل کرے, میں جواب دے سکوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی لینڈ مارک کامیابیوں کے بعد عوام کے پاس ایک ہی چوائس ہوگی کہ پی ڈی ایم کو نہیں, ممتاز اب سوال پوچھا گیا تو میں جواب بھی دے سکتا ہوں. ایک تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بالکل پی ڈی ایم کا اتحاد کا حکومت ہے. جہاں تک یونیورسٹیز بننے کی بات ہے آپ کو وہ ویلکم کرنا چاہیے کہ یونیورسٹیز بن رہے ہیں اور یونیورسٹیز بننے چاہیے میرے خیال میں. جہاں تک ڈالر کی قیمت ہے اور معیشت کا صورتحال ہے, آپ آئی ایم اسیومنگ آپ پڑھا لکھا آدمی ہوں گے, اس لیے آپ جرنلسٹ ہو تو آپ نے یہ اسٹڈی کیا ہوگا کہ ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام کو کیسے سیبوٹاج کیا اور اس سے کس طریقے سے عوام کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہوئے, کس طریقے سے ایک طوفان غربت کا, بے روزگاری کا, مہنگائی کا شروع کروایا گیا. اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا دور میں بھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام طے ہوا ہم اس کو اس سے پہلے جلدی مکمل کر دیتے. شاید اگر ہم وہ کر سکتے تھے تو ہم زیادہ جلدی اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے تھے. اس کام کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکا وزیر خارجہ کی حیثیت میں ہم نے کیا اور کوشش کیا.
اب جب ہم الیکشنز میں جائیں گے ضرور ہمیں عوام کو جواب دینا پڑیں گے، مگر میں اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ عوام کو معلوم ہے کہ میرا نیت بھی صاف تھا، میں نے محنت بھی پورا کیا، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اور محنت کر کے ان کے جو مسائل رہتے ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، جو 15 مہینہ میں نہیں ہو سکا انشاءاللہ اگر ہمیں پورا ٹرم دیا جائے تو ہم وہ ایڈریس کر سکیں گے۔ ناظر فرمانی صاحب۔ سر اس وقت جو آپ سے سوالات ہو رہے ہیں وہ جو آپ نے کامیابیاں کمائی ہیں، لیکن کل سے آپ سے بطور چیئرمین پیپلز پارٹی دس از فارن منسٹر کا پریس کانفرنس، نادر آپ فارن منسٹر سے پوچھیں۔ جی سر، تو اس وقت کل آپ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ جو انتخابات فروری میں ہونے کی بات ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کیا اس فیصلے کو قبول کرے گی کہ اگر فروری میں سوری، یہ فارن پالیسی ریلیٹڈ سوال ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا نادر، آپ بعد میں مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو اچھا جواب دوں گا اس پہ۔ بہت شکریہ میم، مسٹر فارن منسٹر، دس از نیر علی Sorry. اینڈ فرام نیوز 1 ٹی وی۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بھارت کے ساتھ آپ نے اس وقت عام معاہدے سائن نہیں کیے تھے جب آپ دورہ کر کے لوٹے تھے، کیونکہ مودی جو ہے وہ گجر بھی تھا گجرات کا، تو وہ مودی بھی وہی ہے، اور اب جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت جا رہی ہے، تو کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی وہی ہے۔ بالکل ہمارے جو حریت رہنما ہیں یاسین ملک صاحب، وہ پھانسی کا وہیں پر انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا ہمارے اب حالات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ اب ہم کرکٹ ٹیم بھیج رہے ہیں، تو اس وقت آپ جب جا رہے ہیں بحیثیت فارن منسٹر، تو پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو کس نہج پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سو اور ایک ون کوشچن ایٹ ٹائم، نو سوری، ون کوشچن ایٹ ٹائم، ایکسکیوز می، ون کوشچن ایٹ اے ٹائم، ون کوشچن ایٹ اے ٹائم۔ اوکے، جہاں تک ہمارا ایشوز بھارت کے ساتھ ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بچر آف گجرات ہیں، میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی کیا، کافی سوال پوچھا ہے، وی شوڈ لسن کہ جو کشمیر کا اگست 2019 کا مسئلہ ہے وہی وجہ ہے کہ ہمارا بائیلیٹرل تعلقات کو دھچکا ملا ہے، وہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک میننگ فل بائیلیٹرل کانورسیشن ویزا وی پیس ود انڈیا، ویزا وی ٹریڈ ود انڈیا، ویزا وی دہشت گردی، ہم یہ کانورسیشنز اس لیے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بھارت کا اللیگل یونیلیٹرل ایکشنز جس نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو توڑے ہیں، جس نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا ہے، جس نے بائیلیٹرل اگریمنٹس کو وائلیٹ کیا ہے، وہ ہمیں اس مجبوری کی وجہ سے یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کو ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ نقصان ہو، جو یہ بھارت کا تو پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ہم سب کا پلیٹ فارم ہے، اور ہم سب کا حق ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ اپنا موقف آگے لے۔ تو یہ آنسر ہے آپ کا پہلا کویسچن کا کہ ایس سی او کا کیوں اور آئی سی سی کا کیوں، اس لیے ہم نے جا کے ان کو ہروانا ہے، اور وہاں بھارت جا کے ان کو ہروا کے جو ہے مجھے مزہ آئے گا۔ تو یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم ان کی طرح بچکانے حرکتیں نہیں کریں گے، ہم ایک سیریس ملک ہیں، ہم نے پالیٹکس کو یا سیاست نہیں تو فارن پالیسی کو اسپورٹ سے تو ہم الگ رکھیں، ان بچوں کو یہ اس موقع سے میں محروم نہ کروں، اور اگر آئی سی سی والوں اور بھارت وہ سیکیورٹی فراہم کر سکے، کیونکہ آبویسلی یہ جہاں ہو رہا ہے کا تاریخ بھرا ہوا ہے کمیونل رائٹس کے ساتھ، گجرات میں اور پتہ نہیں یہ ابھی ریسنٹلی منی پور میں، اور تو وہ کنسرنس تو ہمارے ہوں گے کہ انہوں نے اتنا پاکستان کے بارے میں غلط امپریشن دیے ہیں، وہ اپنے مسلمان کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو ہمارا کرکٹرز کا سیکیورٹی اوبیسلی ایک کنسرن ہے، ان کا سیکیورٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا آئی سی سی سے بھی بات کریں گے، ان کو بھی پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارا سیکیورٹی کا خیال رکھیں، ہم میچ کے لیے تیار ہیں، آپ تیاری پکڑیں۔
Saudi Arabia and UAE are time-tested friends of Pakistan. They are our brothers in good times and in bad times. But मैं चाह रहा हूँ कि हमें एक ऐसा म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप डेवलप करें कि हम एक दूसरे के कुव्वत बने और बार बार हमें उनके पास मदद के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े. और उम्मीद है कि जिस डायरेक्टरी के साथ हमने इस दफ़ा जो है इनसे बात किया है, वो इन्वेस्टमेंट पे बात किए हैं, पार्टनरशिप्स पे बात किए हैं, पाकिस्तान के सेक्टर्स में आके इन्वेस्ट करके पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम करने की बात किए हैं. और इस तरीके से डिप्लोमेसी जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसका ज़्यादा लॉन्जेविटी होते हैं. बस मेरा अपील ये दो होंगे, एक तो कंटिन्यूटी हो, जो काम हमने शुरू किया है वो कंटिन्यू हो जाए, और हमारा ब्यूरोक्रेसी से कि ये जो इतने अहम काम होते हैं इसमें हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए. हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि हम डिलीवर करें अपने वादे से इन ममालिक के साथ. Mr. Raslan from TAS. Mumtaz, I have a speaker's dinner. He'll be getting it. Honourable Minister, how do you see the priorities of Pakistan regards to bilateral relations with Russia? I'm so glad you could make it to this press conference. Thank you. And what are your impressions of visiting Russia at the beginning of this year? Thank you, thank you. I'm glad you remember. My opposition doesn't remember that I went to Russia. I have actually really enjoyed engaging with Russia throughout my time as foreign minister, both in multilateral fora or bilaterally. Your foreign minister Lavrov is an institution in and of itself. I respect him. I've thoroughly enjoyed my time engaging with him. Obviously, Pakistan does not believe that this is a time for war, and we would like to see a cessation to the hostilities and a peaceful resolution through dialogue and diplomacy through the conflict. Having said that, Pakistan is also keen to engage with all sides. We don't see our relationship with Russia through the prism of what is going on right now. We have a long-term relationship, and we have to look into the future of how we can build our bilateral partnership. There's so much economic potential for us to unlock together. There's so much potential for us to unlock together that we haven't explored yet. I've had the opportunity of being with your foreign minister at the SCO in Uzbekistan, at ASEAN in Indonesia, at the SCO in India, at various opportunities. And I think he's a credit to his profession. I do hope and pray, and the people of Pakistan hope and pray, that diplomacy and peace prevails so that we can go back to normal times, as in peace times there's more scope for economic cooperation. In peace times there's more scope for bilateral cooperation. We're really looking forward to unlocking that potential together. Last question, Mr. Jalil from Voice of America. Thank you for Minister. अभी आपने पाकिस्तान की पॉलिसी पे बात करते हुए कहा कि आपसे पहले वाली हुकूमत में बहुत सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हुए, मिसट्रस्ट था. अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो पहले भी जो हाईएस्ट लेवल पे आपस में कोई राब्ते नहीं हुए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान. आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है? इज इट ए मिसट्रस्ट या अमेरिका की तरजीहात जो है वो कितने में तब्दील हो गई हैं आफ्टर इट्स एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान? हमने पहले भी अमेरिका को यही कहा था जब हम ये वॉर ऑफ टेरर शुरू हो रहा था कि ऐसे नहीं है कि माजी की तरह आपके काम हो जाएगा तो आप निकल जाएगा और भूल जाएंगे. और आज भी हमारा कंसिस्टेंट मैसेज अमेरिका को यही रहा है कि ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में you can't wash your hands and turn your backs on the people of Afghanistan. As far as our bilateral relationship is concerned, obviously trust deficit था. कुछ अजीब हमारा जो साबिक वज़ीर आज़म था उसके हरकतों की वजह से. And then there's a long history of our relationship and a trust deficit on both sides following the fog of war around
around Afghanistan as well. I actually find that now that the fog of war is no longer there, we can see we see each other more eye to eye, and we're actually a lot more aligned in our policies than the public perception is concerned. As far as the Prime Minister's meeting, I do wish that in addition to the Prime Minister Shahbaz Sharif's interaction with President Biden at the United Nations reception, we had managed to do a bilateral of a PM and President level. Inshallah ta'ala, अगले हुकूमत को ये मौका मिलेगा. आप मुझे इजाज़त दें, स्पीकर साहब भी इंतज़ार कर रहा है. 8 बजे मैंने पहुंचना था, it's 8:44. मैं तो अब इधर ही हूँ, अब मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ.